So in this video we will study pedigree analysis. Human traits, human beings cannot be subjected to experimentation. Crosses वगैरह human beings में नहीं करा सकते. So what can be done to study inheritance of some disease or family में कौन सी चीज़ जा रही है. So family history का एक चार्ट बना लेते हैं. Clear? So for study of inheritance of a trait we study the family history. डॉक्टर्स के पास कोई भी कपल जाता है काउंसलिंग के लिए क्योंकि उनकी फैमिली में कोई डिजीज़ है एंड उसको एनालिसिस कराना चाहते हैं कि अगली जनरेशन में आएगी कि नहीं आएगी. सो व्हाट दे डू द डॉक्टर्स और द काउंसलर प्रोड्यूसेस अ पेडिग्री चार्ट. क्लियर? सो पेडिग्री चार्ट में जो सिंबल्स होते हैं, व्हाट इज द सिंबल्स? फॉर मेल्स देयर इज द स्क्वायर, फॉर फीमेल्स अ सर्कल इज देयर, एंड इफ द सेक्स इज अनस्पेसिफाइड तो इस तरह का रोम्बॉइडल है. क्लियर? एंड इफ इट इज़ अफेक्टेड, वो कोई भी जो ट्रेट हम स्टडी कर रहे हैं वो उस बच्चे में आ रहा है तो उसको शेड कर देते हैं. तो यू कैन डू विद योर पेंसिल. ओके, तो उसको शेड, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर मार्क्ड विद शेड्स. पेरेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन से मदर एंड फादर. क्लियर? इफ़ रिलेटिव्स में इन सम कम्युनिटीज़ रिलेटिव्स में शादियां हो जाती हैं तो वहाँ पे ऐसा निशान लगाते हैं. अगर और जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन तरफ लाइन लगा देते हैं और ये दोनों इनके बच्चे हैं. क्लियर? एक मेल है एक फीमेल है. सो दिस इज़ हाउ द सिंबल्स आर यूज्ड इन पेडिग्री. नेक्स्ट, let's study some pedigrees. Pedigree can be, disease can be either on the autosomes or it can be on the sex chromosome. Disease causing जो भी जीन है वो दोनों पे हो सकता है. तो ऑटोसोम्स में if it is dominant trait, dominantly inherited trait, तो वो उसकी एक पेडिग्री बनाई है किसी भी फैमिली की. द डिजीज़ इज़ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. नाउ दिस फीमेल इज़ अफेक्टेड. इस फीमेल में ये बीमारी है और इस मेल में नहीं है. मेल और फीमेल की मैरिज हुई है, उनके बच्चे हैं 1 2 3 4 बच्चे हैं इनके. तो इन चारों बच्चों में से 3 फीमेल्स हैं और ये 2 फीमेल्स हैं और ये 2 मेल्स हैं. दिस मेल इज़ अगेन अफेक्टेड एंड दिस फीमेल इज़ ऑल्सो अफेक्टेड. दिस फीमेल हैज़ 3 children and one of the girl child is affected. Clear? Now what is the genotype of this and what counseling that counselor is going to give to this couple? So since this is affected, so what will be the genotype? It will have capital A, capital A. Dominant है ना? So if both the genes are dominant, only then this disease will occur. So this is this. Whereas ये वाला male is recessive, ये normal है. Recessive इस केस में normal होंगे. Clear? So all these normals are double recessive. Whereas this person, नाउ दिस इज़ अफेक्टेड लेकिन डोमिनेंटली इनहेरिटेड है. एक यहाँ से लिया एक यहाँ होगा. सो दिस वन इज, दिस सन हैज़ दिस जीनोटाइप. नाउ इन द फ्यूचर जनरेशन ऑफ दिस सन चांसेस आर 50-50. ओके, सेम इज़ द केस हियर. दिस फीमेल ऑल्सो हैज़ 1 जीन नॉर्मल क्योंकि इसमें कैरियर हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर इसमें एक भी जीन होता तो ये अफेक्टेड होता. Clear? Same is the case here. So in dominantly inherited disorders, even if there is 1 gene inherited, disease will occur. Now let's talk about a recessive trait, recessively inherited disorder. In this case you can see both the parents are normal, where one of the son
हैज़ द डिसऑर्डर. ये वाला सन नॉर्मल है, ये वाले सन में डिसऑर्डर है, एंड दिस डॉटर हैज़ द डिसऑर्डर. मीन्स सिंस दिस इज रिसेसिव डिसऑर्डर, तो ये दोनों रिसेसिव हैं. दिस वन इज ऑल्सो रिसेसिव, this one is recessive. Okay, so this is the genotype of this, and this is the genotype of this. Now this son also has this genotype. So what will be the genotype of the parents? Since parents are normal, so they must have one dominant gene, तो वो recessive gene यहाँ से आया. Clear? Got it? So this is the inheritance of a recessive state. Sickle cell anemia, ये sickle cell anemia का चार्ट बनाया है किसी का. So this is the inherited, and this is the inheritance. What about all others? They can be either this or can be double dominant. They can have this or heterozygous. They can be homozygous or heterozygous. It will be depicted in the next generation. Okay. Now we will study a pedigree chart for sex-linked disorder, hemophilia. Hemophilia is a disorder which is sex-linked disorder. Clear? Means the gene for hemophilia is on X chromosome. Now this person in this family, this person, this male is hemophilic. X के ऊपर होता है हेमोफिलिया का जीन. So this person is hemophilic and this person is hemophilic. Now can you tell me कि इनका क्या जीनोटाइप होगा? So this is the male XY type and this is the फीमेल XX. तो ये दोनों के दोनों तो नॉर्मल नहीं है. द फीमेल मस्ट बी हैविंग अ रिसेसिव जीन. यहाँ पे फीमेल इज कैरियर. दिस फीमेल इज कैरियर ऑफ द डिसऑर्डर, तो वो कैरी कर रही है. सो द मेल इज अफेक्टेड. नाउ इन सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर व्हाट हैपन्स, द फीमेल पासिस द ट्रेट टू द सन. क्योंकि फीमेल कैरियर हो सकती है. फीमेल में जब तक दोनों रिसेसिव जीन नहीं आते, शी विल नेवर बी अफेक्टेड. क्लियर? सो शी फीमेल इज अ कैरियर एंड मेल विल बी अफेक्टेड, क्योंकि वाई जीन में मेल में कॉरस्पॉन्डिंग जीन जो है ही नहीं है. सो दिस मेल विल बी affected even if there is one gene. Clear? So this kind of inheritance is called crisscross. Father passes the trait to daughter and mother passes the trait to son. Clear? So this is the sex linked pedigree chart. I hope you understood the analysis, pedigree analysis, and now thank you very much. Next we will discuss some disorders, okay, in the next video. Thank you.